Okay, so let's come to the dark reality of appraisals. Okay, Okay. so we do have internal politics happens, and one person is favorite of the manager, and he gets the This good is hike. Yes. this So is the any thoughts on that? this is one of the best questions which you have asked me till now, because being into 5C organizations, I've seen a lot of these things, and main thing is we do have the concept of favoritism. I'm not sure whether I should say this word or not, but we called it as chatna. Okay. There are a lot of employees who believe in doing chatogiri in IT, irrespective of which we do have a concept of favors as well in IT. I'm not sure whether a lot of people know or not, but we do have a lot of favors. It's like when you join initially in any organization, okay, and you are having experience over around 3 years or 4 years, आपके स्टार्टिंग के 2-3 महीने निकल जाते हैं कल्चर समझने में, कल्चर प्रोजेक्ट और बाकी सारी चीजें. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होता है कि देयर इज समवन हु इज बेसिकली वाचिंग यू सिंस स्टार्ट. जब से आपने ज्वाइन किया है और आपका पूरा मॉर्निंग से लेके एंड तक आपकी एक पूरी रिपोर्ट देता है वो बंदा आपके मैनेजर को. समटाइम दिस इज गुड एंड समटाइम दिस इज बैड. प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर उस बंदे के साथ आपकी बन रही है, समझ रहे हो, जम रही है, इफ यू आर हैविंग, और अगर आप बॉन्डिंग बना पा रहे हो उस बंदे के साथ, और आई मीन फॉर अ गर्ल, आई एम नॉट बेसिकली बीइंग अ बायस्ड कि लड़के ही ये होते हैं, सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. बेसिकली क्या होता है कि इफ यू आर एबल टू मेक द रेपो विद हिम, थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू. ओके. प्रॉब्लम वहाँ होती है इफ यू आर आई वुड से हाईली एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स एंड यू आर हैविंग अ गुड कमांड ओवर योर कम्युनिकेशन, और आप बहुत स्ट्रांग हो बेसिकली. ठीक है. कहीं ना कहीं फिर नेक्स्ट बंदा जो होता है वो इनसिक्योर हो जाता है. ठीक है. और वो फिर मैनेजर को आपके नेगेटिव चीजें बताता है, जिससे मैनेजर के दिमाग में आपके लिए नेगेटिव एक तरीके से इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है. और फिर एक टाइम आता है आपका मैनेजर आपको सीधा के नहीं कन्फ्रंट करेगा, वो हमेशा हमेशा आपके एक्शंस और आपके बिहेवियर से आपको जज करेगा. एंड दिस बेसिकली कम्स डाउन टू योर अप्रेजल साइकिल. आप ये एक्सपेक्ट करके चलोगे कि हाँ, जितना मुझे काम दिया है मैंने उतना काम डिलीवर किया है, and I'm expecting at least 30-40% of hike. Problem क्या होता है कि you are basically I would say the worst performer. आपको वो मिलता है, and you are like कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे worst performer का I would say I've got the worst rating and I've got basically worst hike. क्यों? Problem ये होता है that you are not on the good books of the manager. और manager के good books में कैसा होता है? See, we are person, okay? We do have our individual personal experiences. Sorry to say, but there are a lot of basically, I would say, biasm based on the language tone and what we say, the state which you are, okay? It's like, I don't have to be brutal in this conversation, but let me be very much upfront. Sometimes it does happen. If you are from north, okay, and your manager is from south, okay, he will be giving you a good rating and you will be getting a good hike. But in some cases, this is vice versa. You will be, I mean, बहुत ज़्यादा, they will be expecting a lot of things, but you will be getting, I would say, negligible hike. Vice versa भी, that. नहीं, depend करता है. मतलब I wouldn't generalize this, but maybe from your experience you're saying, हो सकता है कि होता है as well. होता है ऐसा. तो डिपेंड करता है कि डिपेंड्स ऑन मैनेजर आई थिंक, बिकॉज अगर उसका कोई फेवरेट बन गया पहले से एंड वो अगर थोड़ा बहुत काम नहीं भी कर रहा है तो उसको कुछ नहीं बोलेगा, उसका फेवरेट हो इसलिए. यस, तो ये तो है ही. इफ समवन इज बेसिकली, वो सीरीज बात हो जाती है राइट इन अ प्रोजेक्ट. इफ समवन इज बेसिकली वेरी मच क्लोज टू योर मैनेजर एंड वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए 3-4 साल हुए हैं और वो बहुत क्लोज है मैनेजर के साथ, तो सीधी सी बात है राइट, मैनेजर की डिपेंडेंसी हो जाती है उस कलीग के ऊपर और वो जो अपने काम है वो डेलीगेट करता है उसको. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली इनडायरेक्ट फेवर. दिस इज ऑल्सो फेवर, बट इनडायरेक्ट फेवर होता है राइट, वर्बली नहीं बोला जाता, बट वो कहीं ना कहीं गुड बुक्स में हो जाता है मैनेजर के. आपको वही समझना है कि you don't have to be basically fight for to showcase. There's a basically thing called as when there is always, I mean, when there is a king in the jungle, okay, don't try to be the immediate king in the jungle. First basically go explore, वो एरिया को देखो. So same applies with the company, with the same applies with the project also. आपको जाना है प्रोजेक्ट में, देखना है कैसे लोग हैं, I mean हर एक प्रोजेक्ट में we have a bunch of good people, we have bad people. So it totally depends upon कि आप कितने टाइम तक उस environment में या फिर वो से उस जगह पे survive कर पा रहे हो. ठीक है. IT is all about survival. The way we are surviving in our life, it's all about same. IT बस एक second, I would say, world है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा conscious होना है. ठीक है.
So these factors plays a lot of things in the appraisal cycle. I have also seen a correct. case where it's like you have done brilliant job, okay? You have gotten client appreciation, you have did everything, ठीक है? प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके ज्वाइन होने से पहले मैनेजर ने किसी और को कमिट करके रखा होता है कि ओके आई विल बी गिविंग यू हाइक दिस ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर, बिकॉज डाउन द लाइन अगर आप इमेजिन करोगे इन अ टीम इफ देयर आर 5 मेंबर्स, ओके, एंड वो 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्ट में है या फिर बहुत टाइम से प्रोजेक्ट में है, सो डेफिनेटली मैनेजर उनको नाराज नहीं कर सकता है बिकॉज दे आर बेसिकली द की परफॉर्मर्स, ओके, इन द ऑर्गेनाइजेशन और आई वुड से इन दैट प्रोजेक्ट। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मैनेजर्स को उनको देने के बाद जितना बचता है वो आपको देना है। वी थिंक ऑफ लाइक मैनेजर कुछ नहीं काम करता है, आई मीन दे जस्ट टॉक विद द क्लाइंट एंड दे जस्ट थिंक ऑफ द बिलिंग और ये सारी चीजें नहीं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग इन द बैक एंड, दे हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, दे हैव टू कैलकुलेट, आई मीन डू मल्टीपल कैलकुलेशंस, किसको कितना हाइक देना है, क्या देना है। और सबसे आई वुड से सबसे बेकार बात क्या होती है कि he is not having that much power, आपको ये भी समझना है। He can only and only talk with his immediate upper manager, max to max manager's manager, that's it. I mean he can't directly go and talk with the VP and say कि नहीं हमें ये चाहिए बंदा, irrespective of if he is asking for I would say 80% hike or 100% hike. You have to understand that thing because करेक्ट, everyone have वो हायरार्की मेंटेन करना पड़ता है। वो तो ऑब्वियसली है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इमीडिएट मैनेजर जो है उससे बोल सकता है, एफर्ट डाल सकता है कि किसी को अगर ये करना है। बट मेरा वही पॉइंट था कि अगर कोई सपोज किसी का कोई फेवरेट है मैनेजर का कि वो उसको तुम्हें लगता है कि वो फेवर करेगा इसको, पर तुम क्या करना है, तुम्हें सिंपली तुम्हारा जो भी टास्क तुम कर रहे हो उसको शोकेस करो, जितना भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कर दिया और मैं बंद कर दिया, खत्म काम। तुम्हें डेटा मेंटेन करना पड़ेगा कि व्हाट यू हैव डन इन दैट फाइनेंशियल ईयर। उसका पूरा डेटा एक साथ दिखाना पड़ेगा जब वो पूछेगा कि व्हाई शुड आई गिव यू हाइक। Yes, you तो won't believe यू हैव टू बी after second organization, I have started maintaining data in the Excel sheet. I would say, either client appreciation और बाकी सारी चीजें maintaining those things. क्योंकि कैसा होता है after appraisal in some of the organization we do have the concept of rating को reject कर सकते हो आप, जहाँ पे you can basically MNCs basically MNCs, yeah. So even some even some mid-scale organizations में भी होता है, but the problem is like क्या होता है कि if you are not having that data, okay, in IT your data speaks, okay, even क्योंकि सी आपके मैनेजर ने आपको कम क्यों दिया उसके पास एक डेटा होगा, ओके। जब आप एक डिस्कशन में जाते हो जहाँ पे आप मैनेजर के साथ डिस्कस करते हो, फिर एक HR हेड भी है एंड इफ देयर आर सीनियर मैनेजर भी है, राइट, एंड यू आर हैविंग अ डिस्कशन, कॉमन डिस्कशन, तो वो डेटा प्रेजेंट होता है कि फॉर XYZ पीपल, ओके, वी हैव गिवन हिम दिस मच टास्क, उसने इतना डिलीवर किया, इतना नहीं किया। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा इन IT। जो भी फ्रेशर सुन रहे हैं हमें या जो भी IT में आने वाले हैं, any field, developer, tester, I would say support, or anyone who are working, always try to have that data in in your system, and always let your manager know that you are also having that data handy कि मैं डेटा मेंटेन कर रहा हूँ। क्योंकि कैसा होता है आप फिर अपने मैनेजर को see there are a lot of people who basically whatever they want they crystal clearly starting में बता देते हैं when they join organization। It's not like 2 दिन के बाद ही they are like I'm expecting 20% hike, no, they basically join, they give their best in the 6 months, try to understand project, work culture, सब चीजें समझते हैं, then after 7 I would say initially, sorry to say, जब आप ज्वाइन करते हो आपको हाइक ना के बराबर मिलती है। So it's like someone who has 5 years of experience, 6 साल के बाद भी आपको सिर्फ 6-7% का ही हाइक मिलेगा, या 7 एक्सपीरियंस के बाद यू कैन एक्सपेक्ट एंड यू कैन डायरेक्टली टॉक विद द मैनेजर कि मुझे फर्स्ट से ज़्यादा हाइक मिली नहीं थी। आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे कॉन्फिडेंस लेवल और बाकी जो चीज़ें हैं डेटा पॉइंट्स वो इवेल्युएट नहीं हो पाए होंगे ढंग से, बट दिस ईयर आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग अ गुड हाइक एंड यू कैन से डायरेक्टली टू हिम कि मैं डेटा मेंटेन कर रहा हूँ। एंड जो मैंने चीज़ आप लोगों को पहले बताई है कि टॉक विद हिम, हैव अ डिस्कशन, व्हाट आर योर, आई मीन हाउ आई कैन अचीव दिस थिंग, 20% हाइक, 30% हाइक, जितनी भी चीज़ें हैं और नहीं होती हैं, सो धीरे धीरे फिर आपको टाइम निकालना है टू स्विच
and easily. Market is always ready to give you, it's all about your communication, how you are basically negotiating. Definitely हम लोग HR सीरीज भी लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास HR के बारे में बताने के लिए. हम लोगों के पास we are a group of community, okay? Lot of HRs are there, lot of testers, lot of developers, support and finance. मतलब जितनी भी एक प्रॉपर कंपनी को सेटअप करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, हमारे पास वो सारी की सारी कम्युनिटी है. एंड बेस्ट पार्ट इज लाइक वी हैव द कॉमन एक्सपीरियंस. सो हम वो उन लोगों को डायरेक्टली शो पे लेके नहीं आ सकते. इट्स ऑल अबाउट कि हमने उनसे जितनी चीजें पूछी है हम वो आपको शेयर कर रहे हैं, सो दैट ये सारी चीजें बाहर आए, लोग जागरूक हो, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड हाउ बेसिकली थिंग्स वर्क. और आपको कैसे जागरूक रहना है इन सब चीजों के ऊपर. सो ये आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम अपने का एक और पार्ट में. तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही. थैंक्स. थैंक यू एवरीवन.